Side A. The record played was, "Neither will he separate from me, nor will I separate from him." Well, these are certainly verses with an unlimited sense. The song is from a film. People of the limited world have sung it. And they have sung it for the limited souls, for those who love in the limited sense. But how are these topics in reality? A student, unlimited. They are unlimited. Then what are unlimited topics? Students are saying something. Who is he and who is I? A student, the Supreme Father, Supreme Soul, Parampita Paramatma. That Supreme Father, Supreme Soul will not separate from us. And what about us? We souls, the children who become stable in the soul conscious stage, will not separate from him either. Will he be present in the golden and silver ages or not? A student is saying something. Will he be present in the golden and silver ages or not? A student, he will not. He will not be there. Therefore, did we separate or not? A student is saying something. Yes, over there, our very form will be the form of light, the form of a point. The Supreme Soul is not separate from the point. If we are stable in the form of the point, if we are stable in the soul conscious stage, then the Supreme Soul is not at all separate from the soul. So, all the limited ideas are removed. When the meanings of these songs are taken in the unlimited sense, the limited ideas are removed. Here, in this world, many are remembered, many bodily beings are loved. Only one is bodiless, that is videhi. V means opposite, viprit. Dehi means soul, atma. What does it mean? A student is saying opposite to the soul. It became opposite to the soul. So what is the meaning of videhi? Students are saying something. In reality, the word V has two meanings. V means opposite as well as V means special, that is vishesh. What? V means special. And V also means opposite. Which meaning will be applied here? The meaning is applied according to the topic, that is prasang. So,
Here the meaning that will be applied for the Supreme Soul is Vishesh Dehi, that is, the special soul. और तो है देही, The others are souls, that is Dehi. देह में रहने वाली आत्माएं और सभी हैं। All the others are souls living in a body. कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो देह में रहने वाली न हो। There is not even one soul that doesn't live in the body. लेकिन परमात्मा कहता है But what is the Supreme Soul like? विदेही। He is a special soul, that is Videhi. देह में रहने वाले को देही कहा जाता है। The one living in the body is called Dehi. देह और देही, The body, that is Deh, and the one who lives in the body, Dehi. रथ और रथी, The chariot, that is Rath, and the charioteer, that is Rathi. रथ में रहने वाला रथी। The one who stays in a chariot is the charioteer. तो ऐसे ही देही माने देह में रहने वाला देही, In the same way, Dehi, it means the one who lives in the body. और फिर विदेही माने विशेष देही। And then Videhi, meaning the one who lives in the body in a special way. देह में तो सब रहते हैं, लेकिन परमात्मा जिस रूप में देह में रहता है, Everyone lives in the body, but the form in which the Supreme Soul lives in the body, इब्राहिम बुद्ध कैसे भी देह में रहते हैं इस संसार में आकर के। also Abraham, Buddha, Christ, live in a body after coming to this world. लेकिन उनकी प्रवेशता का हिसाब और परमात्मा की प्रवेशता का हिसाब अलग अलग। But the account of their entrance and the account of the entrance of the Supreme Soul are different. तो परमात्मा जैसी प्रवेशता तो और किसी आत्मा की हो नहीं सकती। No other soul's entrance can be in the same way as that of the Supreme Soul. तो वो है विदेही। Therefore, he is Videhi. विदेही तो एक ही, Only one is Videhi. उसके मुकाबले कोई विदेही हो नहीं सकता। No one else can be Videhi like him. जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। The one who is called the Supreme Father, Supreme Soul Shiv. अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। Now we have to connect the intellect with him alone. तो देहधारी को याद नहीं कर, We should not remember any bodily being. ब्राह्मण आदि खिलाना ये सब वही कलयुग की रस्म। Feeding the Brahmins and so on, all these things are the traditions of the Iron Age. गुजरात कहाँ की है? Of where are these traditions? कलयुग की दुनिया की रिवाज है कि उन ब्राह्मणों को खिलाओ। These are the traditions of the Iron Age world to feed the Brahmins. तो ये रस्म रिवाज निकली कहाँ से? So when did these traditions emerge? कैसे? A student is saying something. How? Students, in the shooting period, donations are given to the Brahmins. ब्राह्मणों को दान तो यहाँ तो कोई दान पुण्य नहीं करता ब्राह्मणों को। Donation to the Brahmins in the shooting period? Here, no one gives donation to the Brahmins. Student, the unlimited Brahmins. अभी कई ब्राह्मण हैं, The unlimited Brahmins indeed, जो ब्रह्मा की औलाद बने उनको कौन दान पुण्य करता है? who gives donation to those who become the progeny of Brahma. यहाँ तो शिवाला ने कहा है कि डायरेक्ट बाप को ज्ञान दान देंगे। Here, Shiv Baba has said, if you give an offering directly to the Father, तो इसी जन्म का मिलेगा you will receive the fruit of it for 21 births. और देहधारी गुरुओं के तुम रहेंगे तो एक जन्म के लिए मिलेगा। And if you give it through the bodily gurus, then you will receive it for one birth. तो जो ब्राह्मण बन चुके हैं वो तो ब्रह्मा के मुख की बात को कार्य करेंगे। Those who have become Brahmins will follow the words spoken through the mouth of Brahma. लेकिन ब्राह्मण ऐसा काम करते हैं। The unlimited Brahmins don't do so. वो कौन से करते हैं? Then, which Brahmins do this? देह के ज्ञान लेने के बावजूद भी फिर अभी की दुनिया में ही बने रहते हैं। Those who remain in the limited world in spite of receiving the unlimited knowledge. तो वो ही शूटिंग कर रहे हैं क्या? So, it is they who are doing the shooting. What? ब्राह्मणों को खिलाने की। Of feeding the Brahmins. यहाँ कोई ब्राह्मणों को खिलाना, उनको पूजा करना, अर्चना करना, यहाँ कोई ऐसी रस्म बाबा नहीं डाली।
Baba didn't establish here any such traditions like feeding the Brahmins, worshipping them, adoring them, and so on. तो ब्राह्मण आदि खिलाना ये सब हुई कली की रस्म रिवाज। So, feeding the Brahmins and so on, all these are traditions of the Iron Age. जब तमो प्रधान होते हैं When they become tamopradhan, dominated by ignorance or darkness, तो ब्राह्मणियों में जड़ करते हैं। they entangle themselves in Brahmins and Brahmanis. उनके प्रति श्रद्धा विश्वास भावना अर्पण करने लगते। They start offering their reverence, faith, and good feelings to them. तो ये कली की रस्म रिवाज है। So, these are the traditions of the Iron Age. कलयुग है तमो प्रधान युग। The Iron Age is the Tamopradhan age. तो तमो प्रधान युग की शूटिंग हुई जहाँ की ये रस्म रिवाज बढ़ती है। So, the shooting of the Tamopradhan age took place. From that time onwards, these traditions are established. वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। The traditions there and the traditions here are completely different. त्रेता में कोई ब्राह्मण नहीं खिलाए जाते। Brahmins are not fed in the golden and silver ages. वहाँ कोई ऐसी रस्म रिवाज होती नहीं है। Traditions like these don't exist there. यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। Here, you don't have to remember any bodily being. विशेष श्रद्धा विश्वास भावना जिसके साथ अर्पण करेंगे तो वो याद भी आएगा। The one to whom you will offer special reverence, faith, and good feelings will be remembered as well. यहाँ इस दुनिया में किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। You should not remember any bodily being here, in this world. जब तक वो अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। The Purusharth, that is, spiritual effort, continues until that stage is reached. तब तक नहीं याद करना। Until when should you not remember the bodily beings? क्योंकि वो अवस्था तो किसी की अभी बनी नहीं है। It is because no one has reached that stage now. तो पुरुषार्थ चलता रहता है। Therefore, the Purusharth continues. बात कहते हैं जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो भी हैं उन सबको भूल जाना। The father says, as much as possible, you have to forget all those who existed in the old world and then left, or those who are alive here now. पुरानी दुनिया से कौन कौन होकर के गए हैं? Who existed in the old world and then left? तो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक गांधी जी ये सब होकर के गए हैं। Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak, Gandhi ji, all these existed in the old world and then left. उनको भूल जाना और किसको भूल जाना? You have to forget them. And who else do you have to forget? और किसी को भूल जाना है क्या? Do you have to forget anyone else? और भी कोई है क्या? Is there anyone else? शूटिंग पीरियड में कौन? A student. Those who come in the shooting period. Who in the shooting period? शूटिंग पीरियड में पुरानी दुनिया के किनको कहेंगे? Who will be called of the old world in the shooting period? A student. Their root souls. जो सब धर्म के आधारभूत हैं कौन है? Who are the root souls, that is Adharmurt, of all the religions? हमें तो किसी को पता नहीं है कौन है किस धर्म का आधार है कौन कभी छोड़ गया जो होकर गए हैं। We don't know anything. Who is the root soul of which religion? Who has left the body? Who existed? A student. Brahma also existed and then left. तो उनको याद नहीं करना। Shouldn't he be remembered? ब्रह्मा पुरानी दुनिया का कहेंगे। Will Brahma be called the one of the old world? A student. He existed and then left. हाँ, इस तो पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो भी हैं इस तो पुरानी दुनिया में उन सबको भूल जाना है। Yes, you have to forget all those who existed in the old world and left, or those who are in this old world. तो कौन कौन गए हैं और कौन कौन है? So, who has left and who is present? बाबा का इशारा किस तरह है? Who is Baba indicating? ऐसे तो 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है किसको भूल जाए? As such, there are 5 to 6 billion human souls. Who should you forget? है तो सभी की शक्ति है। All of them are indeed in this very world. A student. Some must have passed by before.
उन सबको भूल जाना है। You have to forget all of them. सामने से गुजरे लोगों को भूल जाना है। You have to forget those who have passed by in front of you. बाकी इब्राहिम बुद्ध कहे थे जो सामने से गुजर के नहीं गए उनको नहीं भूलना। And as for the rest, should you not forget Abraham, Buddha, Christ, who have not passed by in front of you? सबको माना सबको। A student. Everyone means everyone. Everyone means everyone. जो है अथवा हो करके गए हैं यानी पास्ट में हो चुके हैं। Those who are present or those who existed and left, meaning they were present in the past. उनको हमने देखा है या नहीं देखा है, सिर्फ हिस्ट्रियाँ उनकी मिल रही हैं, तो उन सबको भूल जाना। It doesn't matter whether we have seen them or not. Only their life story is available. You have to forget all of them. सबको में कौन कौन आ गया? So, who is included among all of them? ब्राह्मणों की दुनिया में तो जो श्रेष्ठ आत्मा है वो तो नहीं आई भाई। Well, the elevated souls of the Brahmin world have not been counted. उनको भी कहेंगे क्या? Will it be said for them too? ब्रह्मा सरस्वती को तो नहीं कहेंगे। It will not be said for Brahma Saraswati. बाबा ने कहा? A student. Baba has said so. Has Baba said so? अच्छा ये भी कि आज में ब्रह्मा सरस्वती को भी जो पढ़ाने वाली आत्माएं थी। All right, the souls who were the ones to teach even Brahma and Saraswati in the beginning of the yajna. ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ट्रेन कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, उनको तो नहीं भूल जाना। For whom it has been said, there were such children who used to give directions to Mama and Baba. They used to make them perform a meditation drill. They used to sit as teachers. You don't have to forget them. ब्राह्मणों की बेहदी की दुनिया में जो आदि में यज्ञ में आदि में जो थे और 69 तक भी। In the unlimited world of the Brahmins, those elevated ones who were present in the beginning of the yajna until 1969, 66 से लेकर के 69 तक भी, जब तक मम्मा बाबा तक भी, तो उन आत्माओं को तो नहीं भूल जाना, वो तो श्रेष्ठ हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। Since 1966, even until 1969, as long as Mama and Baba were present, you don't have to forget those souls. They are the elevated ones in the world of the Brahmins. तो उसको नहीं भूल जाना। Or should they be forgotten as well? Students, it is not about them. उनकी बात नहीं है। It is not about them. वो यदि छोड़ के चले गए, मतलब वो इस लिस्ट में नहीं आते हैं। पुरानी दुनिया में जो होकर गए हैं या जो हैं, उन सबको भूल जाना है। They left the yajna and went away. It means they don't come in this list of you have to forget all those who existed in the old world and left, or those who are in the old world. वो पुरानी दुनिया लिस्ट में आ जाते हैं। Do they too come in the list of the old world? Students, when they come again. दोबारा जब आएंगे, अभी आएंगे दोबारा। When they come again, will they come again now? Students are saying something. अच्छा, मतलब यह है कि होकर के गए हैं उनको नहीं याद करना है। All right, it means that we should not remember those who existed. अगर वो होकर के गए हैं और कहीं प्रेजेंट में पार्ट बजा रही है वो आत्माएं। But if they existed and left, and those souls are playing roles somewhere in the present, है ना? हमारे ब्राह्मण परिवार के विशेष भाती हैं, तो हमको याद करना है। and they are special members of our Brahmin family, then we have to remember them. Is it so? लेकिन यहाँ तो बोला पुरानी दुनिया के जो होकर के गए हैं या जो हैं। But it was said here, all those who existed and left, or those who are present in the old world, होकर के गए और फिर हैं, उन सबको भूल जाना। all those who existed and left and who are present, you have to forget all of them. याद किसको करना है और भूल किसको जाना है? Whom do you have to remember? And whom do you have to forget? Student, Baba is the one who did not go away. He is always present. अच्छा, बाबा को याद करना है। All right, you have to remember Baba. बाकी जो होकर के गए हैं या और जो भी हैं बाबा के अलावा,
उन सबको भूल जाना। Apart from Baba, do you have to forget all those who existed and left or those who are present? अरे मतलब एक के अलावा और किसी को याद नहीं करना। Arey, does it mean that you shouldn't remember anyone other than the one? तो हमारा कार्य जो है कैसे चलेगा भाई? Then how will our work go on, brother? लौकिक का या ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया का कार्य व्यवहार कैसे चलेगा? भूल जाएंगे तो। If we forget everyone else, how will the activities of the Lokik or Alokik Brahmin world go on? भूल जाने का मतलब कार्य व्यवहार तो चलाना है, लेकिन बुद्धि से याद नहीं करना है। To forget means that we have to perform the activities, but we should not remember them through the intellect. अगर हम याद करने बैठे हैं तो याद किसको करना है? सिर्फ एक को, और सबको भूल जाना। क्यों? If we sit to remember, then whom do we have to remember? We have to remember only the one and forget all the others. Why? एक संग जोड़ और सब संग तोड़। Student, only when we break from all. Yes, form the relationship with the one and break it with all the others. एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। One Shiv Baba and no one else. तो ये नहीं कि भाई ब्रह्मा बाबा को कैसे भूल जाए, ये तो बाबा ने कहा तो ब्रह्मा बाबा को भूल जाए या मम्मा को भूल जाए। So, it is not. How should we forget Brahma Baba? Baba didn't say, forget Brahma Baba or forget Mama. मम्मा बाबा को कैसे भूल जाए? How should we forget Mama Baba? लेकिन वो तो गए ना, और शिव बाबा तो अभी प्रैक्टिकल में इस धरती पर आया हुआ है। But they left, didn't they? And Shiv Baba has come in a practical form in this world now. किसलिए आया हुआ है? नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। Why has he come? In order to establish the new world. तो जो आया हुआ है उसको तो हम ध्यान नहीं दें, और जो गए नई दुनिया स्थापना तो नहीं हो सकी, उनको हम बैठ करके याद करें तो क्या होगा? So, what will happen if we don't pay attention to the one who has come, but sit and remember those who left, through whom the new world couldn't be established? जो उन्हीं की गति होगी, जो उन्हीं की गति हुई होगी, वो हमारी गति हो जाएगी। Whatever was their destination will become our destination as well. उनका हार्ट फेल हुआ होगा तो हमारा भी हार्ट फेल हो जाएगा। They would have had a heart fail, so our heart will fail as well. उनका कैंसर होकर के मौत हुई होगी तो हमारे गले में भी कैंसर कोई दूसरी बीमारी हो जाएगी। If they died from cancer, then we too will develop cancer in the throat or some other disease. हम भी बीमारी मरेंगे, We too will die from illness. तो फायदा क्या हुआ? Therefore, what is the benefit? अरे तो जैसे को याद करेंगे वही तो गति होगी। Arey, we will reach the destination just like the one whom we remember. तो क्या करना है? So, what do we have to do? पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। We have to forget all those who existed and left and who are present in the old world. मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। Mine is only one Shiv Baba and no one else. सारा दिन बुद्धि में यही चले, इसको क्या समझाना है? Throughout the day, only this should go in the intellect. What should we explain to whom? इसको क्या समझाना है? यही समझाना है किसको याद करना है और किसको भूल जाना है। What should we explain to whom? Whom should we remember and whom should we forget? We should explain this. सबको बताना है कि आकर के वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझो। We have to tell everyone, come and understand the past, present and future of the world. एक तो बाप को याद करो, बाप की पहचान। One thing is, remember the father. Give the recognition of the father. और दूसरा क्या? And the other thing? What is the other thing? दूसरा दुनिया की जो चक्र है, नॉलेज है, उसको समझो। The other thing is, understand the cycle of the world, the knowledge. जिसको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई। No one knows the past means from when it started. ये दुनिया कब से शुरू हुई। From when did this world start? प्रेजेंट तब क्या है और अब दुनिया की हालत क्या है? What is the present? What is the situation of the world now? शुरू हुई है सतयुग से। It has started from the golden age. तो सतयुग से लेकर अभी तक
फ्यूचर क्या होना है? So no one knows from the golden age until now what has to be the future. बच्चे से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है, यानी भविष्य के बारे में. No one knows from the golden age until now. And what has to be the future, meaning no one knows about bhavishya, that is future. दुनिया तो इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती. The world doesn't know these things at all. तुम बच्चे जानते हो इसलिए चित्र आदि बनाते हो. You children know. For this reason, you make pictures and so on. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का ज्ञान देने के लिए क्या करते हो? What do you do in order to give knowledge about all the three times, that is, the present, past and future? A student. Make pictures. चित्र आदि बनाते हो सृष्टि चक्र वगैरह की. You make pictures and so on of the world cycle, etc. ये है बड़ा बेहद का नाटक. This is a big unlimited drama. वो झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं. Many make those false, limited plays. स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं. Those who prepare the story are separate. और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं. And those who prepare the scenes and scenery of the play are separate. क्या कहा? What was said? जिन्होंने स्टोरी बनाई वो अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं. Those who prepared the story are separate, and those who prepare the scenes and scenery of the play are separate. Someone said something. ये उनकी बात बता रहे हैं. अच्छे में भी है तो बेहद में भी ऐसे. This is being said in the limited sense. It is like this in the limited as well as in the unlimited. स्टोरी बनाने वाले अलग. Those who prepare the story are separate. A student. There are the writer and the director. और नाटक की सीनरी बनाने वाले, चित्रण करने वाले. And those who prepare the scenes and scenery of the play, those who draw the pictures are separate. क्या तो चैतन्य चित्रों की बात. It is about living pictures here. नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं. Those who prepare the scenes and scenery of the play are different. तो ये सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है. So, this entire secret is now in your intellect. ये सीनरी बनाने वाले कौन? Who are the ones who prepare the scenes and scenery? और स्टोरी बनाने वाले? स्टोरी बनाने वाले कौन? And who are the ones who prepare the story? अभी जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा. Whatever you see now will not remain. It will be destroyed. इन आंखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं, Whatever we can see through these eyes. ये आंखें कैसी हैं, ये शरीर कैसा है? What are these eyes like? What kind of body is this? शरीर का अंग ये आंखें कैसी हैं? These eyes, a part of the body. How are they? विनाशी. A student. Perishable. They are perishable. तो इन विनाशी आंखों से जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब खलास हो जाए. So, whatever you can see through these perishable eyes will all be destroyed. तो कौन सी आंखों से देखा भाई? So, through which eyes should we look, brother? A student. Through the third eye. बुद्धि का जो तीसरा नेत्र है उससे जो कुछ हमको दिखाई पड़ रहा है ज्ञान की दृष्टि से वो ही रहेगा. Whatever is visible through the third eye of the intellect, through the vision of knowledge, only that will remain. तो तुमको सच्ची की नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े. You have to show the very nice scenes and scenery of the golden age new world. ये चित्रकार कौन है? Who are the painters? दूसरों की बुद्धि में ज्ञान की सेवा करके चित्रण करना है कि नई दुनिया कैसी होगी. Doing the service of knowledge, you have to draw in the intellect of others what the new world will be like. वर्तमान दुनिया कैसी है What the present world is like. और पहले दुनिया कैसी थी. And what the world was like before. तो ये सीनरी किसी की बुद्धि में ये नक्शा खींचने वाले कौन? Who are those who draw these scenes and scenery, this map in someone's intellect? A student. The painters. हम ब्राह्मण ही ऐसे चित्रकार हैं. We Brahmins are ourselves such painters. जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है. For example, there is the Soni Dwarika in Ajmer. Soni Dwarika, a mythological place where Lord Krishna lived. It is believed to be made of gold. क्या मिसाल दिया? What example was mentioned? वहाँ का मिसाल दिया. The example of which place was mentioned? अजमेर का. Students, Ajmer, of Ajmer.
क्या निकाल लिया? What example was mentioned? सोनी द्वारिका है। There is the golden Dwarika there. तो क्या वास्तव में सोने की द्वारिका है? So, is it the Dwarika of gold in reality? वहाँ तो मॉडल रखा हुआ। A model has been placed there. ये सोनी द्वारिका। A student is saying it is the golden Dwarika. सोनी द्वारिका है तो, लेकिन वहाँ मॉडल है या वास्तव में सोनी द्वारिका है? It is certainly the Soni Dwarika, but is only a model there, or is it the Soni Dwarika in reality? जड़ मॉडल है या चैतन्य? Is it a non-living model or a living one? जड़ मॉडल है। It is a non-living model. अजमेर में सोनी द्वारिका है। There is the Soni Dwarika in Ajmer. तो उनमें से भी सीन सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ। Take the scenes and scenery even from there. Prepare a new world separately and then show it. तुम ब्राह्मण क्या करो? हैं? What should you Brahmins do? उनमें से भी सीन सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ। Do take the scenes and scenery from them. Prepare a new world separately and then show it. तो अजमेर में जो सोनी द्वारिका है उसमें जड़ मॉडल रखा हुआ है। So, in the Soni Dwarika, that is, in Ajmer, a non-living model has been kept. चैतन्य मॉडल तो है नहीं, तो उसमें मूर्ति भी कैसी होगी? It is not a living model. What will the statues over there be like as well? जड़ ही होगी। Students, non-living. They too will be non-living. चैतन्य मूर्ति तो नहीं होगी। अब तुमको क्या करना है? They will not be living statues. And what do you have to do? हैं? A student, the living pictures. चैतन्य चित्र बनना है। You have to become the living pictures. चित्र पूजे जाते हैं ना, तो पूजे कौन से जाते हैं? Pictures are worshipped, aren't they? Which ones are worshipped? जिन्होंने कोई चरित्र अच्छा चरित्र किया होगा तो उनकी पूजा होती है मंदिरों में। Those who would have played some good roles are worshipped in temples. और चरित्र अगर अच्छा किया ना हो, And if they haven't played good roles, रावण जैसा चरित्र किया होगा तो उसके मंदिर बनेंगे। if someone played a role like Ravan, will his temples be built? उसको तो और जलाएंगे और Instead, they will burn him all the more. यदि कोई दुख देता है तो भुट्टो का पाकिस्तान के भुट्टो का पुतला जलाया भारतवासियों ने। Like if someone gives sorrow, the Bharatvasis, that is, residents of Bharat, burnt the effigy of Bhutto, that is, a political leader of Pakistan. दुख देने वाले का तो पुतला जलाते हैं, मंदिर क्या बना के याद करेंगे? The effigy of the one who gives sorrow is burnt. Why will they make his temples and remember him? तो यहाँ चैतन्य की बात है। Thus, here it is about the living one. चैतन्य का चित्र तैयार करना है। You have to prepare the picture of the living one. पहले अपना चित्र तैयार करेंगे तो हम दूसरों का भी तैयार कर। When we create our own picture first, we will be able to create that of others too. अपने अंदर धारणा नहीं होगी तो दूसरों के अंदर धारणा करा ही नहीं सकते। We cannot make the others inculcate virtues if there are no virtues inculcated within us. अपने अंदर स्नेह नहीं होगा परमात्मा के प्रति तो दूसरों के अंदर परमात्मा के प्रति स्नेह पैदा करा नहीं सकते। We cannot create love for the Supreme Soul in others if there is no love for the Supreme Soul within us. तो बोला कि जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है तो वो तो हुई जड़। So it was said, for example, there is the Soni Dwarika in Ajmer. So that one is the non-living one. उदाहरण कहाँ की दिया? जड़ का। Of what was the example mentioned? Of the non-living one. अच्छा चलो अजमेर में तो सोनी द्वारिका है। All right, there is the Soni Dwarika in Ajmer. तो ब्राह्मणों ने अभी तक कुछ तो मॉडल बनाया होगा। So the Brahmins must have created some model up till now. जड़ को देख करके कैसे कम से कम जड़ ही बना करके दिखा दो। Looking at the non-living one, prepare at least the non-living one and show it. तो जड़ को बना लिया होगा कि नहीं? So they must have prepared the non-living one or not? अजमेर माने क्या? What does Ajmer mean? अजमान बकरा। Aj means goat. अजमान बकरा। Aj means goat. और मेरा माने मेरा बेटा। And Mer means sheep. भेड़ बकरिया। Goats and sheep. अजमेर माने भेड़ बकरियों का शहर। Ajmer means the city of goats and sheep. क्या? भेड़ बकरियों का शहर माने अन्य श्रद्धालुओं का शहर। What? The city of goats and sheep.
meaning the city of those with blind faith. भेड़ बकरियां क्या करती हैं? What do goats and sheep do? एक भेड़ जहाँ घुसी उसके पीछे पीछे सारी घुस जाएंगी। Wherever one sheep goes, the entire herd will follow it. चाहे गड्ढे में गली चली जाए। It doesn't matter whether they go into a ditch. ये नहीं देखेंगे हम कहाँ जा रहे, बुद्धि नहीं चलाएंगे। They will not see where they are going. They will not use their intellect. बस पीछे पीछे चल पड़ो, बुद्धि चलाने का काम नहीं। Just follow. That's it. There is no question of using the intellect. तो अजमेर शरीफ में होता है मुसलमानों का उर्स। So, the Urs of the Muslims takes place at Ajmer Sharif. Urs, that is, the ceremony celebrating the mystic union of the soul of a deceased peer or saint with the Supreme Being. वो मेला बहुत प्रसिद्ध है। That fair, that is Mela, is very famous. एक जाते हैं उसके पीछे सब जाते हैं। Someone goes and all the others go behind that one. अरे भाई अजमेर तो हज करने के लिए जाते हैं। Are, they go on a pilgrimage, that is Hajj, to Ajmer. तो उधर हज करने भी जाते हैं, क्या उससे भी सवाब मिलेगा? So, they also go on a pilgrimage there. Then they would receive a reward of faith, that is sawab, for it as well. अजमेर में भी ढेर जाते हैं, उससे भी सवाब मिलेगा। Many go to Ajmer as well. They will receive a reward of faith for that as well. क्यों जाते हैं, क्या मिलता है, क्या लक्ष्य है, क्या लेकर के आते हैं, वो कुछ पता नहीं। Why do they go there? What do they receive? What is their goal? What do they bring? They know nothing. ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है तो हम ब्राह्मणों की भी बात। It is not only about the Muslims. This is also about us Brahmins. क्या? What? हम ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? Where do we Brahmins go? Someone said, on physical journeys. ब्राह्मण कहाँ जाते हैं? पता करते। Where do the so-called Brahmins go? वो भी कहाँ की यात्रा करते हैं? They too go on a journey of which place? A student of Mount Abu. यात्रा तो करते हैं ना? They do go on a journey, don't they? तो वहाँ क्या है? चैतन्य मूर्ति है या जड़ मूर्ति है? So, what is there? Is there a living statue or a non-living statue? ब्रह्मा की जड़ मूर्ति है। A student, a non-living statue. There is a non-living statue of Brahma. अजमेर में भी Even at Ajmer, हिंदू जहाँ जाते हैं वहाँ क्या है? where the Hindus go, what is there? ब्रह्मा की जड़ मूर्ति रखी हुई है। A non-living statue of Brahma has been placed there. वहाँ क्या है? What is there? ब्रह्मा की जड़ मूर्ति रखी हुई है। A non-living statue of Brahma has been placed there. तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी तक कौन सा अजमेर तैयार किया गया? Which Ajmer has been prepared in the Brahmin world too? कौन सी सोनी द्वारिका तैयार की गई? जड़ या चैतन्य? Which Soni Dwarika has been prepared? Is it the non-living one or the living one? जड़ मूर्ति रखी हुई है। A student, the non-living one. A non-living statue has been placed there. तो उसका नाम क्या दे दिया? What name was given to it? सोनी द्वारिका। सोनी द्वारिका है ना? The Soni Dwarika. What does the Soni Dwarika mean? मधुबन स्वर्गाश्रम। The Madhuban Swargashram. That is, asylum of paradise. क्योंकि सोना तो स्वर्ग को ही कहा जाता है, सत्युग को ही कहा जाता है। Because paradise itself is called gold. The golden age itself is called so. सोना किसको कहा जाता है? What is called gold? सोने जैसी दुनिया कौन सा युग है? सत्युग। In which age is the world like gold? Satyug. Literally meaning the age of the truth. It is also called the golden age. तो उसका नाम क्या दे दिया? What name was given to it? मधुबन स्वर्गाश्रम। Madhuban Swargashram. ऐसे तो ऋषिकेश में साधु संतों ने भी अपने आश्रम का नाम क्या रख दिया? स्वर्गाश्रम। Array, as such, what name have the holy men given to their ashram in Rishikesh? That is, a pilgrimage place. Swargashram. का बहुत बड़ा आश्रम है ऋषिकेश में साधुओं का, उसका नाम रखा है स्वर्गाश्रम। There is a very big ashram of sages in Rishikesh. It has been named the Ashram of Paradise. वो तो जरूर होगी। A student. There is Mayapuri as well. It will certainly be there. अगर जड़ होगा उसमें वो गुण नहीं होंगे तो मायापुरी जरूर साथ लगी हुई होगी। If it is non-living Swargashram, if it does not have those qualities of a Swargashram,
then Mayapuri will certainly be attached to it. तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग हो रही है. In the same way, this shooting is taking place in the world of the Brahmins, जिसका मिसाल बाबा ने दिया कि जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है. an example of which Baba has mentioned. For example, there is the Soni Dwarika in Ajmer. कैसी द्वारिका है? What kind of Dwarika is it? सोनी, लेकिन कहने मात्र या वास्तव में? It is Soni, of gold. But is it just for the sake of saying it, or is it in reality? वास्तव में कहने मात्र सोने की है या सिर्फ वास्तव में है या नहीं है? Is it of gold just for the sake of saying, or is it of gold in reality or not? कहने मात्र है. स्वर्गाश्रम तो नहीं है. A student, for the sake of saying. It is for the sake of saying. It is not the ashram of paradise. स्वर्गाश्रम में जहाँ स्वर्गाश्रम होगा, In the ashram of paradise, at the place where the ashram of paradise will be, जहाँ स्वर्ग बन जाएगा, उस दायरे के अंदर अकाले मौत नहीं हो सकती. at the place which will become paradise, within its limits, there cannot be untimely death. तो उनमें से भी सीन सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ. So, taking the scenes and scenery from there itself, prepare a new world separately and then show it. चलो जड़ ही सही, लेकिन क्या करो? Alright, if it is non-living, but what should you do? उसमें जो सीन सीनरी है, उसमें से भी अच्छे अच्छे चित्र तो है ना. The scenes and scenery that are in it, there are some good pictures in it too, aren't there? जो अच्छे अच्छे चित्र हैं उनको उठा लो. Yes, pick up the good pictures that are there. अच्छे अच्छे पात्रधारी हैं, उनकी चित्रों को उठा लो. Pick up the pictures of the good actors. मानो उनकी नकल कर सकते हो. It means that you can copy them. सीन सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके फिर दिखाओ. After taking the scenes and scenery, create a new world separately and show it. इसलिए अव्यक्त वाणी में क्या डायरेक्शन दिया? For this reason, what direction was given in the Avyakt Vani? जो मिनी मधुबन बना लेंगे, वहाँ बाप दादा आवेंगे. Whoever makes mini Madhubans, Bap Dada will visit their places. मिनी मधुबन का नक्शा बना करके दिखाओ. Create a model of mini Madhubans and show it. ऐसा नक्शा बना करके दिखाओ कि सब ब्राह्मणों को देखने की दिल हो. Create and show such a model that all the Brahmins would wish to see. तो सोनी द्वारिका है, तो उनमें से सीन सीनरी लेकर के नई दुनिया अलग बना करके सब दिखाओ. There is the Soni Dwarika, so take the scenes and scenery from there. Create a new world separately and show it. अभी बनी नहीं है चैतन्य में. It has not been created now in the living form. क्या करना है? What do you have to do? बना करके सोनी द्वारिका बना करके दिखाओ. Create the Soni Dwarika and show it. इस पुरानी दुनिया को आग लगनी. This old world has to be set on fire. और जो सोनी द्वारिका बनेगी, जहाँ कृष्ण का राज्य दिखाया जाता है, And the Soni Dwarika, which will be created, where the kingdom of Krishna is shown, उसमें कृष्ण राज्य करेगा. लॉर्ड कृष्ण, Krishna, Lord Krishna, will rule in it. इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है. This old world has to be set on fire. इनका भी नक्शा तो है ना. There is a model of it as well, isn't there? सोनी द्वारिका का, जो पुरानी दुनिया में सोनी द्वारिका का मॉडल रखा हुआ है, हद में या बेहद में. The Soni Dwarika, the model of the Soni Dwarika that is in the old world, in the limited or unlimited, हद की दुनिया में या ब्राह्मणों की देहादी की दुनिया में, उसको क्या होना है? आग लगनी है. in the limited world and in the unlimited world of the Brahmins, what has to happen with it? It has to be set on fire. इनका भी नक्शा तो है ना. There is a model of it as well, isn't there? और ये नई दुनिया इमर्ज हो रही है. And this new world is emerging. अब ब्राह्मणों की, संपूर्ण ब्राह्मणों की वो नई दुनिया इमर्ज हो रही है. Now the new world of the Brahmins, of the complete Brahmins, is emerging. ऐसे ख्यालात करके अच्छी रीति बनाना चाहिए. With these thoughts, you should prepare it in a very nice way. क्या
है? क्या बनाना चाहिए? सोनी द्वारिका। What? What should you prepare? The Soni Dwarika. ये तो तुम समझते हो, इस समय मनुष्यों की बिल्कुल जैसे पत्थर बुद्धि है। You understand that at this time the intellect of human beings is completely like a stone. पत्थर बुद्धि में ये आता ही नहीं कि सोनी द्वारिका बनाने वाले भी कोई और हैं। It doesn't come into the stony intellects at all that there are some others who prepare the Soni Dwarika. जो परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले हैं, वो ही सोनी द्वारिका बना सकते हैं। Those who are the ones to follow the Srimad of the Supreme Soul, only they can create the Soni Dwarika. जो परमात्मा को उड़ाएंगे और कहें हम ही स्वर्ग बनाएंगे। Those who remove off the Supreme Soul himself and say, we ourselves will create paradise. हमारी मत से स्वर्ग बनेगा। Paradise will be created according to our directions. उनको कैसी बुद्धि बताया? What kind of intellect have they been said to have? पत्थर बुद्धि। A student, stony intellects, stony intellect. कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। You explain so much, even so it doesn't sit in the intellect. तो वह जो नाटक वाले सीन सीनरी बनाते हैं, So the painters of the play prepare the scenes and scenery. कोई से मदद ले, स्वर्ग की सीन सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। You should take help from someone among them and prepare very nice scenes and scenery. क्या कहा? What was said? वह जो नाटक वाले सीन सीनरी बनाते हैं, तो कौन से नाटक वाले? Those in the play prepare the scenes and scenery. Which ones of the play? दुनिया Of the physical world. उसकी दुनिया वाले जो मदद लेंगे। Will we take help from those of the physical world? A student is saying something. ब्राह्मण की दुनिया में भी नाटकवाद बहुत है। There are many performers in the Brahmin world too. वह जो नाटक वाले सीन सीनरी बनाते हैं, Those in the play who prepare the scenes and scenery, कोई से मदद लेकर के स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। you should take help from someone and prepare very nice scenes of paradise. यानी उन्हें नाटक बनाने वालों में भी कोई है जो स्वर्ग की सीनरी सोनी द्वारिका बनाते हैं। It means that among those who make those plays too, there are some who prepare the scenery of paradise, the Soni Dwarika. चलो जड़ ही सही, लेकिन फिर हम क्या करें? All right, even if it is the non-living one. But then what should we do? उनमें से कोई से मदद लो। Take help of someone among them. वो लोग प्रजापिता उधर है। Students, Prajapita. Prajapita? Is Prajapita over there? प्रजापिता को तो ठोक दिया। कहाँ? You put Prajapita there. Where? हुआ जड़ सीनरी बनाने वालों। There, among the makers of the non-living scenes and scenery. सही बात? That's absolutely right. A student said something. क्या नवीन भाई? Why Navin bhai? A PBK brother. प्रजापिता से मदद लेना है। A student said something. Do you have to take help from Prajapita? यहाँ प्रजापिता से मदद लेने की बात की है। Was it mentioned here about taking help from Prajapita? A student. There must be someone in a living form. कहते हैं कोई प्रजापिता होगा उससे मदद लेनी। Do you have to take help from some Prajapita who is in the living form? Students are saying he should be someone elevated. प्रजापिता का बैठ है। He should be someone elevated. Is Prajapita unrighteous? तो उससे मदद लेना है। Students, he is the only elevated one. Do you have to take help from him? किनको लेना है? Students are saying something. Who has to take? लेने वाला कौन? देने वाला कौन? Who is the one who takes? Who is the one who gives? कौन है बनाने वाले? A student. There would be some who create the Soni Dwarika. Who are the ones who create it? A student. Those who are in the world of the Brahmins. कौन है? प्रजापिता है या प्रजापिता के बच्चे हैं या कौन है? Who are they? Is it Prajapita
or the children of Prajapita? Who are they? बच्चियां हैं। Are they his daughters? प्रजापिता मदद लेने वाला किसकी मदद लेगा? A student is saying something. Is Prajapita the one who takes help? Whose help will he take? है? प्रजापिता देने वाला, फिर समझाने वाला कौन है? A student is saying something. Is Prajapita the one who gives help? Then who is the one who explains? Side B. A student is saying they have to take the help of the Vijay Mala, that is, the rosary of victory. Those who are the beads of the Rudra Mala, that is, the rosary of Rudra of the advanced party, have to take help. Whose help do they have to take? They have to take the help of those who have prepared a non-living model. So those who make the play prepare the scenes and scenery. They are performing the play of preparing the non-living scenes and scenery. At least they have made it. You weren't able to make even that. Did you do anything? They drew a line this big, so draw a line bigger than it. But you didn't do anything. Did you create any gathering and show it? Is there anything called a gathering? Arey, can a gathering of at least 2 souls be seen? Where one would walk along with the other in a gathering? Where one would follow the other in love and cooperation? Where they would accept the words of each other? Is there a gathering like this? No. Vah Prajapita. Students are saying something. Let mine gathering be made first. Let mine be made before my father's. After that, Prajapita's gathering will be made. When our own gathering is not made, then how will that of Prajapita be made? Look, his father came alone. His mother didn't come. The student said something. Yes, she should follow. Shouldn't she? She doesn't follow. His face is on one side and her, that is student's wife, face is on the other side. Arey, this situation is in every house. There are hearts of soil in every house. इसलिए बाबा ने बोला वो जो नाटक बनाने वाले सीनरी बनाने वाले हैं बनाते हैं उनसे मदद लेकर स्वर की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए. For this reason, Baba said, taking help from someone among those who prepare the play, who prepare the scenes and scenery, you should make very nice scenes and scenery of paradise. वो जड़ बनाते हैं तुम कैसे नहीं बनाओ. They prepare a non-living one. You make a living one. बनानी चाहिए. You should make it. स्वर्ग में क्या होगा? What will happen in paradise? जो भी गृहस्थ धर्म होगा, देवी देवता सनातन धर्म होगा, देवी के साथ देवता भी होंगे. Whichever religion of the household will be there, the ancient deity religion that will be there,
The female deities will be along with the male deities. So the one will accept what the other said. Will there be anyone who lives under someone else's control or not? Will the kingdom be ruled systematically there, or will it be ruled just like here, the kingdom of democracy? One minister established one law, another one came and cancelled that law. The Supreme Court gave the order of hanging him to death to someone and the president released him. Then the Supreme Court again trapped him. So, is there any master? So, you were told to prepare these scenes and scenery, but you will not be able to prepare it alone. What? A student. You will not be able to prepare it alone. What are you? You are the beads of the Rudramala. You don't have the power of purity. You are lame. What? Your leg is broken. Then what should you do? Make the story of the blind one and the lame one in practical. What was said? A student said, make the lame one sit on the shoulder of the blind one. Yes, make the lame one ride on the blind one. Meaning, take a ride. On whom should you ride? Ride over the blind one. He doesn't have eyes. He doesn't have the knowledge of the beginning, middle and end in the intellect. It was said now, wasn't it? The knowledge of the beginning, middle and end of the world is in your intellect. Those poor fellows are blind. They don't have this knowledge in their intellect. So, take their help. Taking help from them, you should prepare very nice scenes and scenery of paradise of ancient deity religion. Of the religion of the household, from where the ancient deity religion begins. Certainly, one couple will be ready. What kind of couple? Such a couple that what one said, the other accepted it. So that it should be visible that this family is like this, a family like in paradise. So, you should prepare such scenes and scenery. Those people will give good ideas. About what? Those people will give good ideas about putting into practice the knowledge that is dharana. Dharana is visible in them. Purity is still. When there is purity, they have dharana. What is the main dharana? A student, that of purity. If there is no dharana of purity, then all the dharanas are worthless. If someone has all the dharanas, but if there is no dharana of purity,
तो धारणा कोई काम की नहीं। Then all the dharanas are of no use. क्योंकि पवित्रता होती है सहन शक्ति वाले। Because the one who has the power of tolerance has purity. क्या सर्वगुणों का राजा कौन सा गुण? What? Which virtue is the king of all virtues? सहन शक्ति। A student. The power of tolerance. The power of tolerance. अगर सहन शक्ति नहीं है तो पवित्रता की शक्ति नहीं हो सकती। If there is no power of tolerance, there cannot be the power of purity. पति ने पत्नी को उंगली लगाई और वो आगे दौड़ पड़ी तो उसको क्या कहेंगे? If the husband touched the wife with a finger and she ran away, so what will it be called? Is there the power of tolerance? A student. No, there isn't. Arey, Baba has said in the Murli, all the men are Duryodhan Dushasan, villainous character depicted in the epic Mahabharata. The virgins, Kanyas and mothers are Draupadis, wife of the Pandavas. Some of them can be Shurpanakha, that is, sister of Ravan. But mostly in the country of Bharat, there are Draupadis, Sitas, Parvatis, those who take a cross. So, wasn't she able to tolerate even this much? Like Baba put down the men completely. What did he say? All the men are like Duryodhan Dushasan. They cannot resist doing their work when they are on their own with some female. So, now all are like this in the Rudramala 100%. So, certainly there is some other party like this. Whose help, the power that we don't have, we should take it from others. What is the harm in it? So, those people will give good ideas. They will give methods. Do like this and this. Having explained to them, you should prepare such a nice one, scene of paradise. Explain what? Will they explain to us or will we explain to them? Arey, it was said just now. They will give good ideas. They will give methods. Did they become the ones who explain to us? Or did we become the ones who explain to them? A student is saying something. Arey, there is the story of the blind one and the lame one. We have to cross the river. So, we can give them the ideas of the beginning, middle and end of the world. That the knowledge says that it has to happen like this and this. Follow the path in this way, so we will cross the river. It is shallow here. It is deep here. You will drown here. And here you will be safe. So, give these ideas. They don't know these ideas. We have to give them these ideas. And we should take from them the idea. How we should follow the concept of what one said, the other one accepted it. Just like it was said in the Avyaktavani for Didi and Dadi,
Didi and Dadi are two separate personalities. लेकिन ऐसे चल के दिखाती हैं जैसे एक है. But they behave in such a way as if they are one. मनमोहनी दीदी थी ना, और कुमारी का दादी थी. There was Manmohini Didi, Abhike's sister, wasn't there? And there was Kumarika Dadi, Abhike's sister. तो ऐसे चल के उन्होंने दिखाया कि बाहर के ब्राह्मण लोग ये नहीं समझ सकते दीदी दादी कि दो मत हैं. So they behaved in such a way and showed that Brahmins from outside cannot know that Didi and Dadi have two different opinions. आपस में इनके संस्कारों का टकराव है अंदरूनी. And there is an internal clash in their sanskars. ये कोई ब्राह्मण कह नहीं सकता. No Brahmin can say this. तो ये सिर्फ हुई ना उनके अंदर. This was a speciality in them, wasn't it? एक परिवार में एक कुटुंब में रह करके ब्राह्मण, हम ब्राह्मण भी तो ऐसा कर सकते हैं. Living in one family, we Brahmins can do like this as well. लेकिन वो आइडिया नहीं. But we don't have that idea. जब वो आइडिया नहीं तब क्या करो? What should we do if we don't have the idea? मदद ले लो. Take help. दरभंगा भारत तो आई. After all, Bharat is a beggar. तो मदद लेने में क्या होती है? What difficulty is there for you in taking help? उनको समझा कर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर के समझे. Having explained to them, you should prepare it, that is the scene of paradise, so nicely that the human beings would come and understand. और फिर इसमें भीख मांगने की भी बात नहीं. And there is no question of begging for alms in this at all. यहाँ तो भाई व्यापारी बने की बात है. एक सौदा तुम दो और दूसरा हम दे. Here it is just a question of business. You give one thing and we will give the other. एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से दो. तो ये तो लेन-देन का मामला हो गया. Give through one hand, take through the other. So it became a situation of exchange. इसमें कोई भीख मांगने की बात है नहीं. There is no question of begging for alms in this. तो उनको समझा कर के ऐसा अच्छा बनाना चाहिए. So, having explained to them, you should prepare it, that is the scene of paradise, so nicely जो मनुष्य आकर के समझे. बरोबर सत्य में से एक ही धर्म था. that the human beings would come and understand that definitely in the golden age there was only one religion. तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा रहती. Even among you children, there are number-wise ones who have dharana. उनको समझ नहीं है कि सत्युग में एक ही धर्म था. They don't have the understanding that there was only one religion in the golden age. एक ही कुल था. There was only one clan. एक ही भाषा थी. There was only one language. उनको समझ नहीं है. They don't have this understanding. एक ही धारणा थी. There was only one dharana. यानी जो नारायण की धारणा, उसी धारणा पर सब चलते थे. It means that everyone used to follow the dharana of Narayan. ऐसा नहीं नारायण की धारणा अलग और प्रजा की धारणा दूसरी हो जाए. नहीं. It is not that the dharana of Narayan will be different and the dharana of the subjects will become different. No, एक ही धारणा सबकी होती थी. there used to be only one established dharana. एक ही कुल था, एक ही भाषा थी, एक ही मत था. There was only one clan. There was only one language. There was only one opinion. सब में एक ही धर्म था. There was only one religion in the golden age. तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा रहती है. Even among you children, there are number-wise ones who have dharana. धर्म माना धारण. Religion means dharana. देह अभिमानी बुद्धि को ठीक कहा जाता है. The body-conscious intellect is called dirty. देह अभिमान आया, ऐसे नहीं कि काम दिखा रहा कोई ठीक हुआ. Body consciousness arose. It is not that someone is dirty only when the vice of lust arose in him. देह के प्रति कोई नहीं कथित है तो ठीक हुआ. If there is any kind of attraction towards the body, it is dirt. माँ है, अपने बच्चे को चिपकाई करती है, दूसरा बच्चा गन्नों पड़ा हुआ है उसे नहीं उठा रही. ठीक है. For example, a mother, if she embraces her own child and wanders about, but she doesn't lift the other child who is lying in mud, what is it?
Should we call it body consciousness or not? What is it? She has this body consciousness. This is a child born from my womb. The child born from my body is my child. That one is born from someone else's body. What is it? This body consciousness too is dirt. Which vice is the root of the 5 vices? Body consciousness. This also is a vice. The father of the 5 vices. The one who is soul conscious, that is dehi abhimani, literally meaning the consciousness of being the one living in the body, is called a beautiful flower. जो आत्मा अभिमानी होते हैं, मेरा बच्चा उसको भी आत्मिक दृष्टि से और दूसरा बच्चा है उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखे. Those who are soul conscious will see their child as well as another child through a soul conscious vision. तो क्या हुआ? बुलबुल फूल. So what are they? They are beautiful flowers. एक परमात्मा बाप की जो शक्तियाँ हैं, शिव शक्तियाँ, माने जगत माता होगी. Meaning those who are the Shaktis of one Supreme Soul Father, the Shiv Shaktis. Meaning they became the mothers of the world, that is Jagat Mata. जगत माता होगी तो जो भी बच्चे होंगे वो सब क्या दिखाई देंगे? So when they have become the mothers of the world, what will all the children appear to her? अपने बच्चे की भाई आत्मिक दृष्टि होगी. They will appear to her like her children. So this is a soul conscious vision. देह अभिमानी बुद्धि को चीटी कहा जाता है, देह अभिमानी को बुलबुल फूल कहा जाता है. अभी तो फूल बनते हो. The body conscious intellect is called dirty. The one who is soul conscious is called a beautiful flower. Now you become flowers. देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हो. You remain just thorns because of being body conscious. देह अभिमान में नहीं आना चाहिए. You shouldn't come into body consciousness. क्योंकि देह समझने से ही 5 विकारों की पैदाइश होती है. Only because of considering yourself a body, the 5 vices are born. चाहे काम की, चाहे क्रोध की, चाहे लोभ, चाहे मोह, चाहे अहंकार. Whether it is lust or anger or greed or attachment or ego. उन बच्चों को तो इससे पुरानी दुनिया से वैराग आना है. You children have to develop vairag towards this old world. Vairag, the stage of detachment and indifference towards things of this world. तुम्हारा है देह की बुद्धि, देह का वैराग. Yours is the unlimited intellect, the unlimited vairag. उनका तो होता है हद का वैराग. Their vairag is limited. क्या कर दिया? वैराग छोड़ दिया, लेकिन 5 विकारों को नहीं छोड़ा. What did they do? They renounced the household, but they didn't renounce the 5 vices. वैराग छोड़ दिया, अपना वैराग छोड़ करके दूसरे वैराग बनाई. They renounced the household. Having renounced their household, they made some other palaces and buildings. और मेहरबानियां बना करके फिर वही संबंध. After building palaces and buildings, again the same relationships. उन्हीं संबंधों में देह के संबंधों में बुद्धि फंस गई. The intellect was entangled in the same relationships, in the bodily relationships. तो तुम्हारा है देह का वैराग. So, yours is the unlimited vairag. तुम घर गृहस्थ में रहते हुए भी उस घर गृहस्थ से बुद्धि का योग तोड़ देते. क्यों? You break the connection of the intellect with the household, even while living in that household. Why? क्योंकि बाबा ने बता दिया यहाँ जितने भी युगल हैं आपस में तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी. Because Baba has said, all the couples that are here, you Brahmins and Brahmanis, among each other, इस दुनिया के जितने भी हैं संबंध वो सब कैंसिल हो जाएंगे. all the relationships that there are in this world will be cancelled. और नई दुनिया में तुमको क्या होगा? नए संबंध मिलेंगे. What will you have in the new world? A student, new relationships.
You will receive new relationships. ये नहीं, यही मिलेंगे. It is not that you will receive the same ones. क्या था? अगर है अच्छा है, चलो यही बात है, तो फिर ब्रह्मा को तो मम्मा नहीं मिलनी चाहिए सच्चे हुए. What was said? All right. If it is like this, then Brahma shouldn't get Mama in the golden age. क्यों भाई? Why, brother? अगर बाबा ने मुरली में ये बात बोली है, if Baba has said this in the Murli, कि तो जो अभी संबंध है पुरानी दुनिया के या पुरानी दुनिया की जो भी चीजें तुम यहाँ होते वो सब चेंज हो जाएंगी. the relationships that you have now in the old world or whatever of the old world that you can see through these eyes will all be changed. कोई तो यही लड़ाता रहता, हमारी युगल ज्ञान में नहीं चलती. Some have just this complaint, my wife doesn't follow knowledge. या ये लड़ाता रहता है कि हमारा आदमी ज्ञान में नहीं चलता. Or else they have this complaint, my husband doesn't follow knowledge. ये दुखी होते रहते हैं. They keep feeling sorrow for this alone. अरे दुखी होने की इसमें क्या बात है? अरे, what's the reason to feel sorrow in it? आत्मा की दृष्टि में रहो तो दुखी होने की कोई बात है ही नहीं. If you have the soul conscious vision, then there is no question of feeling sorrowful at all. क्यों दुखी हो? नई दुनिया में नए संबंध होंगे. Why should you feel sorrow? There will be new relationships in the new world. ये पुराने संबंध वहाँ थोड़े चलते रहेंगे. These old relationships will not continue there. ऐसे थोड़े जो पति पत्नी है उसका रमेश है तो वहाँ बच्चों में भी जाकर पति पत्नी बनेंगे. It is not that those who are couples here, like Usha, a BK mother, and Ramesh, a BK brother, they will go in the golden age and become a husband and wife there as well. अच्छा तो वो तो बात हो गई, नहीं बनेंगे. All right, that topic is over. They will not become couples there. बाबा ने कह दिया नहीं बनेंगे तो हमने मान लिया. When Baba said they will not become couples there, we accepted this. लेकिन जिज्ञासा पैदा होती है कि मम्मा बाबा भी क्या होगा. But curiosity arises, what will happen with Mama and Baba? क्या बालकराम? Isn't it so, Balakram, a PVK brother? बहुत दिन बाद आए आज. कहाँ से टपक गए? हैं? You have come today after many days. From where did you drop in? बालक तो आते ही हैं कभी कभी. A student is saying something. Balak does come sometimes. हैं? मुजाहिदा लेने के लिए. क्या? Personal discussion with a brother. और करनी सर्विस हो गई अब. हैं? मिलिट्री सर्विस है क्या? हैं? एसडीएम तक है. ये ऐसा क्लास मत करो, सोते रहो पड़े पड़े. हैं? हैं? सुबह बुला लेता है बैंक में. हैं? जो तगड़ी सर्विस की वो भी जून मई जून में होती थी वो तो गई निकल, तो बैंक में पहुंच गए. कारण ये कहता है सुबह को क्लास नहीं मत करो. बीच में कोई चित्रकार है अच्छा मिला कि नहीं मिला? चित्र बनाने वाला भैया मिल गया कि नहीं सहयोगी? कि जो है जैसा चित्र बनाते वैसे ही चलते रहेंगे. चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है? चेंज करना है. जबरदस्ती हो जाएगी चेंज करोगे तो. अच्छा अंदर कुछ और बाहर कुछ और ये रखा हुआ. अच्छा Personal discussion with a brother. तो उनको समझा करके ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर के समझे. So, having explained to them, you should prepare it, that is, the scene of paradise, so nicely that human beings come and understand. उनको समझाना चाहिए. You should explain to them. बात बीच में रह गई, कोई जवाब नहीं आया. जो बात पूछा उसका जवाब दिया नहीं कि मम्मा बाबा क्या होगा. The question was left, no answer came. No one gave an answer to the question that was asked. What will happen with Mama and Baba? मम्मा बाबा माने सरस्वती माँ और ब्रह्मा, ये दोनों सचमुच में जाकर के युगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? Mama Baba, meaning Mother Saraswati and Brahma, will these two become a couple in the golden age or not? बनेंगे. A student, they will.
ये तो बाबा का बाबा से तो झूठा हो गया। So this verse of Baba turned out to be a lie. ये तो युगल नहीं थे। A student, they were not a couple. Yes, one thing is that they were not a couple. वो उनकी बेटी थी। She was his daughter. ये युगल की बात नहीं थी। हाँ। There was no question of them being a couple. तो बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। Definitely, there was only one religion in the golden age. तुम बच्चों में भी नंबरदार हैं जिनको धारणा रहती है। Also, among you children, there are number-wise ones who have dharana. देहाभिमानी की बुद्धि को चीटी कहा जाता है। The body-conscious intellect is called dirty. देहाभिमानी को बुलबुल फूल कहा जाता है। The soul-conscious one is called a beautiful flower. अभी तुम फूल बनते हो। Now you become flowers. देहाभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते। You remain just thorns because of being body-conscious. तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग आना है। You children have to develop vairag, detachment towards this old world. तुम्हारी है देह की बुद्धि, देह का वैराग। Yours is an unlimited intellect. You should develop unlimited vairag. हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। We really hate this brothel, that is Vaishyalaya. क्यों देह की बुद्धि है? Why do you have an unlimited intellect? देह का वैराग क्यों है? Why do you have unlimited vairag? क्योंकि जानते हैं इस दुनिया के जो भी संबंध हैं। It is because you know that all the relationships of this world, a student is saying something. भारत में तो संबंधों का आधार कहाँ है? Where is the basis of the relationships in the country of Bharat? सबसे बड़ी संस्था कौन सी संबंध जोड़ने वाली? Which is the greatest institution to join relationships? संबंध जोड़ने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? इसको हमने कैंसिल कर दिया। What is the institution which joins relationship called, which we have cancelled? शादी। Marriage. शादी की जो इस दुनिया में संस्था है, The institution of marriage in the world. हर देश में शहर में पड़ रही है। तो There is one in every country, every city now. वो शादी बर्बादी कर दी बाबा ने। Baba has called marriage ruin. बाबा ने क्या बताया? ये शादी है बर्बादी। What has Baba said about it? Marriage brings ruin. तो हमने वो संस्था ही कैंसिल कर दी। So we cancelled that very institution. क्यों? Why? क्योंकि वो जो शादी कराते हैं उससे क्या होता है? Because what arises from the marriage that they arrange? रिजल्ट क्या आया? ये दुनिया क्या बनी? What was the result? What did the world become? शिवालय बनी। Did it become the temple of Shiv, Shivalaya? अरे शादी कराई जाती है, एक दूसरे में प्यार हो, मोहब्बत हो। Array, marriage is arranged so that they may have love for each other. They may have affection for each other. आपके विचारी बन के रहें, मनसा से, वाचा से, कर्मा से। They may remain unadulterated through the mind, through the speech, through the actions. भक्ति से जो इसलिए जन्म जन्मांतर तक बना रहे। Through the drishti, vision, through the attitude, vritti, so that the affection may remain for many births. और होता क्या है? And what happens? शादी हो के आई, The bride came after marriage to her husband's home, भैया जी छोटे हैं घर में, and if there is a younger brother of the husband at home, हमारी भौजाई आएगी, इनसे मजाक कर लें। he will say, my sister-in-law, that is Bhaujai, has come. Let me have fun with her. वे नंदोई आई है, उन नंदोई ने अपनी लगाई दी। The husband's sister's husband will say, my sister-in-law, that is Nandoi, has come, and he will create a relation with the bride. तो दस्त संबंध घुसे हुए, वो वैचार्य बनाने वाले संबंध हैं। So, corrupt relationships are attached with marriage. Those are the relationships that create a brothel. बात तो मुरली में यहाँ तक बता रहे हैं। The father is saying even that much in the Murli. क्या क्या बताया? What has he said? बाप बच्ची को नहीं छोड़ता आज की दुनिया में। A father doesn't leave his daughter in today's world. भाई बहन को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता। A brother doesn't leave his sister. An uncle doesn't leave his niece. तो नंदोई और भाई भौजाई। Then what about the relation of the husband's sister, that is Nandoi, the brother and sister-in-law
that is Bhaujai. घर घर में बाबा ने शौचालय क्यों बताया? Why has Baba said that there is a brothel in every house? चलो, कर्म इंद्रियों से नहीं होता वो कहीं, लेकिन दृष्टि तो जरूर घर घर में दूषित है. All right, it mustn't be taking place through the organs of action somewhere, but the drishti and vritti are definitely polluted in every house. A student is saying something. इस वैश्यालय से हमको बड़ी नफरत है. We hate this brothel very much. हमको इससे वैराग आता है. ये हमारा बेहद का वैराग. We feel vairag towards it. This is our unlimited vairag. कोई घर से छोड़ने के लिए बाबा ने नहीं कहा. Baba hasn't said to renounce the family and household. क्या कहा? What has he said? बुद्धि से त्यागने के लिए कहा. He said to sacrifice it through the intellect. बुद्धि जो है ये नहीं रखनी है कि ये हमारी युगल है. It shouldn't be in the intellect. This is my wife. क्या बुद्धि रखनी है? What should be there in the intellect? हम भी ब्रह्मा कुमार बन गए, तो ये भी ब्रह्मा कुमारी है. I have become a Brahma Kumar. Therefore, she too is a Brahma Kumari. आज नहीं तो कल इसको बनना है. दुनिया को आनी है तो पटे रहे. If not today, she has to become a Brahma Kumari tomorrow. The new world has to come. The atom bombs are being prepared. बने हैं तो बने, छूटेंगे जरूर. If they have to be made, they will be made. They will certainly explode. यहाँ से 50 साल पहले एटम बम थे और न कोई ऐसी लड़ाई की संभावना है जिससे दुनिया खत्म हो जाए. 50 to 60 years ago, the atom bombs were not there and there weren't any chances of a war which may destroy the world. अब तो ऐसी चीज बन के तैयार हो गई है. Now such a thing is ready. तो ऐसे तो कोई समझने की बात है नहीं कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख करके समझ लेता है. So, there is no question of thinking like a pigeon thinks after seeing a cat. क्या? What? बिल्ली आई और कबूतर ने आंखें बंद कर ली. बिल्ली आई नहीं. When a cat comes, the pigeon closes its eyes and it thinks, the cat didn't come at all. हमारा क्या करे? आई नहीं. What will it do to me if it hasn't come at all? तो ऐसे तो हो नहीं सकता. एटम बम तो फटेंगे जरूर. So, it is impossible. Atom bombs will definitely explode. ये दुनिया तो अब ऐसी नहीं रह सकती. ये दुनिया तो खराब हुई गई. Now, this world cannot remain like this. This world is already finished off. ये अर्जुन ये सब मरे पड़े. Oh Arjun, all of them are dead. हाँ. तो हमको उस वैश्यालय से बड़ी नफरत है. So, we hate this brothel very much. अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे. Now we are becoming flowers to go to the Shivalaya. इसको नफरत है. Who hates it? ये नफरत के संस्कार किसके अंदर हो सकते हैं? In whom can there be these sanskars of hatred? नफरत तो अच्छी चीज नहीं है. Hatred is not a good thing. बाबा ने तो कहा किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए. Baba has said you shouldn't feel hatred towards anyone. वैश्याम से नफरत रहेगी. वो आत्मा नहीं है क्या? Why should there be hatred towards prostitutes? Aren't they souls? नफरत क्यों भाई? A student is saying something. Why should there be hatred, brother? A student is saying something. नहीं, इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है. No, we hate this brothel very much. अभी हम शिवालय में जाने के लिए फूल बन रहे हैं. Now we are becoming flowers to go to the Shivalaya. नफरत का मतलब कि बुद्धि में रखना है. Hatred means that we keep in the intellect कि हमको ये बेविचारी रावण राज्य खराब करना है. that we have to finish off this adulterated kingdom of Ravan जो पराई स्त्री को ऊपर नजर डालने वाला है. that looks at a woman belonging to someone else with a bad eye. कौन? रावण और रावण का राज्य. Who? Ravan and the kingdom of Ravan. उसको नष्ट करना है और क्या करना है? We have to destroy it. And what do we have to do? वो नई दुनिया स्वराज्य लाना है. We have to bring the new world of self-sovereignty.
जहाँ कृष्ण राधा को प्यार करेगी, राधा कृष्ण को प्यार करेगी। Where Krishna will love Radha and Radha will love Krishna. तो अब वैश्यालय से बड़ी नफरत है। So now we hate this brothel very much. वैश्यालय से नफरत होगी तो वैश्याओं से भी नफरत हो जाएगी। If we hate the brothel, then we will also hate the prostitutes. फिर उनका सुधार कैसे होगा? Then how will they be reformed? तो नफरत है का मतलब कोई प्रैक्टिकल में ये बात नहीं बुद्धि में धारणा करनी है। So we hate means we should not assimilate this in the intellect, in practice. लेकिन बुद्धि के अंदर ये रखना है कि ये दुनिया ही रावण राज्य की है। But we have to keep this in the intellect that this very world is the kingdom of Ravan. तो रावण की जैसी दुनिया है, रावण जैसा होगा तो उसमें प्रजा भी जितनी होगी वो सब कैसी होगी? Therefore, just like the world of Ravan is, just as Ravan is, his subjects, however many they are, what will they be like? वैसी बन जाएगी। They too will become like him. तो अब हम राम के राज्य में रहें, राम बने। So now if we live in the kingdom of Ram, if we become Ram, राम जैसे बने तो राम जैसी प्रजा भी, यथा राजा तथा प्रजा। if we become like Ram, then the subjects who are like Ram, like the king, so the subjects. राम का विरुद्ध क्या था? What was the title of Ram? मर्यादा पुरुषोत्तम। The highest one among all those who follow the code of conduct, that is Maryada Purushottam. मर्यादा पुरुषोत्तम माने? What does Maryada Purushottam mean? A student, he followed the code of conduct. मर्यादा में थे, यानी दूसरी शादी जीवन में नहीं करनी। He followed the code of conduct, meaning he followed the rule that he shouldn't marry a second time in his life. या दूसरी पत्नी के ऊपर कोई दृष्टि, वृत्ति, कर्म, वाचा से आसक्त नहीं होना। Or that he should not be attracted to the wife of someone else through drishti, vision, through vritti, vibrations, through actions or through speech. ये उनकी मर्यादा थी। This was his Maryada. तो यथा राजा तथा यथा प्रजा ही बन जाएगी। So the subjects will become like the king. तो जब ये बात आएगी बुद्धि में कि अब हम तो आपस में भाई बहन, When this thought has come in the intellect that now we are brothers and sisters among ourselves, ब्रह्मा की औलाद, we are the progeny of Brahma, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। we are Brahma Kumars and Brahma Kumaris. तो जब हमने निश्चय कर लिया पक्का कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, So when we have developed this firm belief that we are Brahma Kumar और हम तो भारतवासी हैं, and we are the residents of Bharat, तो भारतवासी जो घर के अंदर ये धारणा पक्की कर ले कि हम ब्रह्मा कुमार हैं, तो उसकी पत्नी बेचारी कहाँ जाएगी? therefore when the residents of Bharat put this thought into practice firmly at home that they are Brahma Kumar, then where will his wife, the poor one, go? पत्नी तो फिर ऑटोमेटिकली ब्रह्मा कुमारी बन गई। क्यों? Then the wife became a Brahma Kumari automatically, naturally. Why? Students are saying something. नहीं, भारतवर्ष में तो बहुत सिस्टमेटिक चलता चला आ रहा है। No, it has been continuing very systematically in the country of Bharat. यहाँ तो वो प्रथा ही नहीं है कि एक शादी है और दूसरी शादी कर लो। It is not at all the tradition here that when someone is already married to someone, he can perform another marriage. पहले तो चांसेस नहीं है ऐसे। Firstly, there are no chances for it because the family and the society will not allow such a thing to happen. फिर हम तो ब्रह्मा कुमार बन गए, तो बुद्धि में ये बात रखनी है। Moreover, we became a Brahma Kumar. So, we have to keep this in the intellect. क्या कि हम ब्रह्मा कुमार हैं और ये ब्रह्मा कुमारी। What? I am a Brahma Kumar and she is a Brahma Kumari. तो जब ये ब्रह्मा कुमारी है तो हमारी कौन हुई? हमारी कौन हुई? If she is a Brahma Kumari, think, who is she for me? बहन हुई ना। She is my sister.
isn't she? बहन के साथ कैसे करना चाहिए? Then, how should we behave with a sister? ऐसा तो नहीं हम बाप को धोखा देते हो, बाप की आंखों में धूल झोंक रहे हो. We should check. Are we betraying the father? Are we throwing dust in the eyes of the father? अच्छा चलो, पोता मेल भी दे देते हो बाप को. All right, you even give the pota meal to the father. तो एक बार पोता मेल दिया जाता है, 2 बार पोता मेल दिया है, पोता मेल देते रहो, फिर वैसे ही चलते रहो. The pota meal is given once. The pota meal is given twice. And if we keep giving the pota meal and then keep doing the same mistake, तो बाप क्या करेगा? what will the father do? मारेगा. Someone said, he will beat us. चिपट गए. You are scared. ऐसे नाले का तो हो जाता. बाप के डंडा में दबना हुआ है तो घर से निकाल दिए. If power comes in the father's stick, he will throw you out of the house. हमको शिवालय से बड़ी नफरत है. We hate this brothel very much. अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं. Now we are becoming flowers to go to the Shivalaya. बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं, कैसी? Even while becoming a flower, if someone behaves badly, in what way? वैशाली वाली भाई बहन को नहीं छोड़ता, तो क्या हो गया घर में? Like a brothel, a brother doesn't leave his sister alone. Then what has happened in the house? वैशाली हो गया. A student, brothel. It became a brothel. तो जानवर जैसी जिंदगी हो गई. It became a life like an animal. अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भूत की प्रवेशता है. If someone conducts themselves badly like this, then it is understood there is the entrance of a ghost in him still. एक ही घर में पति अंश बन रहा है और पत्नी बहुली है तो डिफिकल्टी हो जाती है. When in the same house, the husband is becoming a swan and the wife is a female heron, then it becomes difficult. तो डिफिकल्टी हो जाती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है. It is then that it becomes difficult, but it doesn't happen so often. कम से कम भारतवर्ष में तो अक्सर नहीं होता. At least in the country of Bharat, it doesn't happen so often. कोई सुपनखा पूतना होती है. A few are Surpanakha and Putna, that is, witches in the epics Ramayana and Mahabharata. बाकी कन्या माताएं सब क्या होती हैं? But what are all the rest of the virgins and mothers? अपने आप विकार के लिए मांग करने वाली कभी नहीं होती. They are never the ones to ask for vices themselves. उनसे पहले जाति करेगा, आक्रमण करेगा, सहन करेगा. A man will compel first. He will attack. He will put forward the first step. स्त्री कभी सहन नहीं करती. A woman never steps forward first. तो ये बोला एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी बहुली है, तो डिफिकल्टी होती है. So it was said, when in the same house the husband is becoming a swan and the wife is a female heron, then difficulty is created. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, But if it isn't like this, क्या? अगर ऐसा नहीं है, what? But if it is not like this, वो बहुली नहीं है, गंध खाने वाली नहीं है, if she is not a female heron, if she is not the one to eat dirt, उसकी चलन से साबित हो जाता है कि हाँ ये बाहर जाकर के परपुरुष के साथ गंध खाने वाली नहीं है, तो डिफिकल्टी होनी चाहिए. her behavior proves that she is not the one to go outside and become dirty with some other man, then should there be difficulty? तो परेशान होना चाहिए कि ज्ञान में क्यों नहीं करती. Should you be worried? Why doesn't she follow knowledge? अरे वो तो ऑटोमेटिक ब्रह्म कुमारी बन गई. अरे, she became a Brahma Kumari automatically. उसके लिए दुखी होने की दरकार, परेशान होने की दरकार नहीं. शांत में रहो. There is no need to become sorrowful about it. There is no need to worry about it. Remain in your dignity, that is Shan. क्या शांत में रहो? In what dignity should you stay? कि औरों के तो घर में बाहर घरवालियाँ चलती हैं, घर में नहीं चलती हैं. That in others' houses their wives may follow the knowledge or not. बहुत से ब्रह्मा कुमार हैं जिनकी घरवालियाँ नहीं चलती. There are many Brahma Kumars whose wives do not follow the knowledge. हमारी तो ऑटोमेटिक घर में पहले से ही ब्रह्मा कुमारी है.
In our house, automatically a Brahma Kumari is already there. क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का मूल है, उद्देश्य क्या है? Because what is the main goal of Brahma Kumars and Kumaris? A student. Purity. Purity. तो पवित्रता, अगर पवित्रता की देवी गढ़ रहे हैं तो हमको कोई परेशान होने की डिफिकल्टी समझने की कोई बात नहीं है. So, if the female deity of purity is at home, then we have no reason to worry, to consider that there is difficulty. तो पत्नी बगुली है तो डिफिकल्टी होती है. So, there is difficulty if the wife is a female heron. तो सहन करना पड़ता है. Then he, the husband, has to tolerate. वो तो टांग खींचेगी. She, the wife, will pull his legs, that is, pull him into vices. तो पुरुष तो होता ही विकारी है. A man is vicious anyway. वो तो विकारी बनेगा ही. He will certainly become vicious. तो उसको तकलीफ हो सकती है. So, he can find it difficult. लेकिन अगर बगुली नहीं है तो डिफिकल्टी होने की कोई बात नहीं है. But if she is not a female heron, then there is no question of difficulty at all. बहुत खुश होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए. You should become very happy. Remain cheerful. उसमें से सहन करने की कोई बात नहीं है. There is nothing to tolerate in it. समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है. अगर बगुली है तो If she is a female heron, it is understood that it is not in their destiny. सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं है. Not all of them are going to be part of the deity clan. जो बनने वाले होंगे वो ही बनेंगे. The ones who will be part of it, only they will become deities. सब नहीं बन सकते. Not all can become deities. बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट आती है. किसके पास? Reports of bad conduct of many come. To whom? बाबा के पास बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट आती है. Reports of bad conduct of many come to Baba. इसकी खराब चलन की रिपोर्ट यहाँ बात कर रहे हैं बाबा. About whose report of bad conduct is Baba talking here? A student of those who follow the knowledge. No, a student of the spouse. Yes. वो बताया ना, एक ही घर में पति हंस बन रहा है और पत्नी बगुली है तो डिफिकल्टी होती है. It was said, wasn't it? When in the same house, the husband is becoming a swan and the wife is a female heron, then there is difficulty. पत्नी बगुली है तो डिफिकल्टी होती है. There is difficulty when the wife is a female heron. बहुतों की खराब चलन रिपोर्ट आती है. Reports of bad conduct of many come. रिपोर्ट किसकी आती है? Whose reports come? Students, the female heron. बगुली वो तो ज्ञान में चलती नहीं, उसकी रिपोर्ट कहाँ से आ जाएगी? The female heron. She does not follow the knowledge. From where will her report come? रिपोर्ट तो अपन ही दोगे कि दूसरे का पोता मिल दोगे? Will you give your own report or will you give the pota mail of the others? पोता मिल किसका दोगे बाप को? Whose pota mail will you give to the father? अपना पोता मिल दे. तो ब्रह्मा कुमार होगा तो अपना पोता मिल देगा, दूसरे का देगा. Give your pota mail. If someone is a Brahma Kumar, will he give his pota mail or will he give the one of someone else? क्यों बालकराम? अपना देगा. What Balakram? He will give his own. तो अपना रिपोर्ट दे सकते हैं. तो है क्या हम गिर गए, हम पतित हो गए? He can give his own report. I fell down. I became impure. तो बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट आती है. इनमें ये आखिरी गुण है. So, reports of bad conduct of many come. Such and such devilish traits are in them. दूसरों का आखिरी गुण बताने क्या? Do you have to say about the devilish traits of the others? पोता मिल किसका देना? अपना देना. Whose pota mail do you have to give? You have to give your own. इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, अपना पोता मिल रात को देखो. For this reason, Baba explains every day. Check your pota mail in the evening. किसका पोता मिल? अपना. Whose pota mail? Yours. अपना पोता मिल रात को देखो कि आज कोई आखिरी काम तो हमने नहीं किया. Check your pota mail in the evening. Did I do any devilish work today? आखिरी काम किया तो हम कौन है? If we did devilish work, then who are we?
We are devils. बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वो भी बताओ. Baba says, also tell me about all the mistakes that you did in your lifetime. ऐसे नहीं कि अभी अभी वर्तमान का बताते रहो. It is not that you go on telling me about the present. और पिछला खाता क्लियर हुआ नहीं तो क्या होगा? And the previous accounts are not clear. Then what will happen? पिछले का ब्याज चक्रवृद्धि चढ़ता रहेगा. The interest of the previous sins will also continue to accumulate. ये नया खाता कभी कैंसिल नहीं हो सकता चाहे कितनी भी कोशिश करें. This new account can never be cancelled, no matter how much you try. पिछला अगर छुपा लिया और नया नया देते रहे. If you have hidden the previous pota mail and continue to give the new ones, तो कभी खाता क्लियर नहीं होगा. then the account will never be clear. तो बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वो बताओ. So, Baba says, tell me about all the mistakes that you did in your lifetime. और कई भूल करते हैं. Some make serious mistakes. The recording stops here.